नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जित्तर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर इंस्टीट्यूट इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड सोशल ऑडिट. Today we shall discuss chapter 6, social audit standards framework. So what are the social audit standards? Social audit standards framework developed by Institute of Chartered Accountants of India provides a social auditor guidance for conducting a social audit. The social audit framework is applicable from the date of its posting on the website. So ये एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. तो यहाँ पर सोशल ऑडिट is applicable from the date, so there are number of options will be there. So answer of its posting on the ICI website. Social audit framework does not cover any elements of financial audit or review which may be covered by the relevant auditing and so फाइनेंशियल ऑडिट अलग ऑडिटिंग और रिव्यू स्टैंडर्ड्स के द्वारा किए जाते हैं, सोशल उनमें नहीं आता. So list of audit standards. The social audit standard has 16 thematic areas which are listed below. Number 8, SAS 100. Here it is for eradicating hunger, poverty, malnutrition and inequality. SAS 200 is cover promoting healthcare, including mental health and sanitation, and making available safe. SAS 300 is promoting education, employability, and livelihoods. SAS 400 promoting gender equality, empowerment of women, and LGBTQIA+ communities. SAS 500 ensuring environmental sustainability, addressing climate change, including mitigation and adapting forest and wildlife conservation. So 5 कम से कम आपको याद होनी चाहिए. अभी क्वेश्चन ऐसे 500 तक आ रहे हैं, अभी बाद में इसके अलावा भी आने शुरू हो जाएंगे. SAS 600 is protection of national heritage, art and culture. 700 is training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports, and Olympic sports. 800 is supporting incubators of social enterprises. SS 900 for supporting other platforms that strengthen the non-profit ecosystem in fundraising and capacity building. SS 1000 promoting livelihoods for rural and urban poor, including enhancing income of small and marginal farmers and workers in the non-profit sector. SAS 1100 is on slum area development, affordable housing, other intervention to build sustainable and resilient cities, disaster management, including relief, rehabilitation, and reconstruction activities, and promotion of financial income. तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि जैसे इसको एक स्टोरी बनाकर याद रखा जा सकता है. एक एक व्यक्ति जो भूखा है, जब उसे खाना मिलता है तो उसकी हेल्थ बनने लगती है, जो दूसरे नंबर पे आता है. जब हेल्थ बनती है तो वह अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है और एजुकेशन की तरफ भागता है, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भागता है और अच्छा जीने की तरफ भागता है. उसके बाद उसके मन में जेंडर इक्वलिटी की भावना उत्पन्न होती है और वुमेन की तरफ खिंचाव होता है, जिससे कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन होता है. उसके बाद दोनों जब मिलते हैं तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, मिटिगेशन की बात करते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में लव अफेयर्स करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं. उसके बाद सुखी लाइफ होने के बाद नाचना, गाना, नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर बनाना भी अच्छा लगता है. फिर इतनी स्थिति होने के बाद, सब कुछ होने के बाद खेलना कूदना, तो रूरल स्पोर्ट्स आ जाता है, जिसमें पैरालंपिक स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स आ जाता है. फिर इतना सब कुछ होने के बाद उसको सोशल सर्विस का भी ध्यान आता है और इंक्यूबेटर्स को
सपोर्ट करता है। इसके बाद नॉन प्रॉफिट इकोसिस्टम को, फंड रेजिंग को, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देता है ताकि समाज में इक्वलिटी आए, शांति आए और अच्छा रहे। फिर प्रमोटिंग लाइवलीहुड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन पुअर इंक्लूडिंग एनहांसिंग। खेती बाड़ी देखता है सामान तो वहीं से आना है, खाने पीने का सामान आना है, तो रूरल और अर्बन पुअर की तरफ ध्यान जाता है ताकि उनकी इनकम भी बढ़े। और स्लम एरिया डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाता है ताकि सब लोग अच्छी तरह हंसी खुशी जिए, सस्टेनेबल और रिलीजियस सिटीज में जिए। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाता है ताकि स्लम एरिया को खत्म किया जा सके, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और सब कुछ होने के बाद जन धन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर आदमी की इनकम बढ़ाने के लिए बैंकों की जरूरत पड़ती है। बैंकों में खाता खोलना, फाइनेंशियल इंक्लूजन समाज की प्रायोरिटी। तब फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू लैंड और प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं उनका भी भला होना चाहिए, उनके पास लैंड और प्रॉपर्टी एसेट्स होने चाहिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का युग बढ़ रहा है तो डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट, मोबाइल फोन एक्सेस की तरफ भी, डाटा प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। और यदि कोई भी आपसी विपदा के कारण, प्राकृतिक विपदा के कारण माइग्रेंट हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, तो उनके वेलफेयर को भी बढ़ावा देना है। इस टाइप से आप भी एक स्टोरी बना सकते हैं और उसके हिसाब से उनको उसमें फिट कर सकते हैं। सो नाउ स्कोप ऑफ सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड। The social audit standard should be applied while conducting a social audit. The relevant SAS thematic area should be chosen according to the activity, social project which is being audited. तो इनमें से ये सारे के सारे थेमेटिक एरियाज हैं। कोई आदमी सॉइल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई अफोर्डेबल हाउसिंग में काम कर रहा है, कोई क्लाइमेट चेंज को बता रहा है, कोई कार्बन कार्बन को कम कर रहा है, कोई पहाड़ों की रक्षा कर रहा है, कोई नदी को साफ कर रहा है। ये सभी के सभी थेमेटिक एरियाज में आ जाते हैं। The social project may be for a social enterprise, for profit or not for profit, and may also have appropriate application to other related functions for social auditors. So इसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही शामिल है। नाउ कंप्लायंस विद SAS. So कंप्लायंस विद सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्या मैंडेटरी हैं या वॉलंटरी हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सोशल ऑडिट कंडक्टिंग फॉर सोशल एंटरप्राइजेज listed on social stock exchange. Social auditors should ensure that guidance available in SAS are followed while conducting social audits. If for any reason a social audit is not able to perform a social audit in accordance with the social audit standard, his report should draw attention to the material departures therefrom. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर भी आता है कि एक ऑडिटर सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर पाता है तो उसको क्या करना चाहिए। Social audits are expected to follow SAS in the social audits commencing on or after the effective date specified in the SAS. So, ये effective date के बाद ही social standard का compliance expected है। Now, social audit standard framework. Institute of Chartered Accountants of India Social Audit Standards Framework provides guidance for elements and objectives of a social audit performed by social auditors. It provides a framework of reference for social auditors when performing social audits, responsible party, engaging party, and other stakeholders who are intended users of social audit. SAS framework does not itself establish standards
or provide specific requirements for the performance of specific thematic areas, example, poverty, climate change, health, etc. Applicability of SAS framework is social audit standard framework will be applicable from the date of its posting on the ICI website. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. Reference to the ICI social audit standard framework is mandatory. ये दोबारा से फिर आया, पहले भी इस चीज को आ चुका है कि मैंडेटरी है while conducting social audits. The social audit standard contain guidance on performance of thematic areas for social audit engagements. The appropriate social audit standard thematic area may be referred for relevant social indicators. Now, what are the objectives of SAS framework? The objective of SAS framework is to provide guidance for social audit projects, programs, project-based activities of social enterprise, registered, listed on social stock exchange, and social audit of projects, program, project-based activities of any other organizations. तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रोग्राम्स के ऊपर, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटीज के ऊपर जो सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है उनके बारे में गाइडेंस. To provide related guidance on matters relating to preparation of social audit report in accordance with social audit findings based on the social audit procedures performed and evidence. So, preparation of social audit report in accordance with social audit findings based on social audit procedures performed and evidence. Now, what is the scope of framework? This framework applies to social audit, that is, social impact assessment of project, program of social enterprises to be conducted by social auditor using the principles given in social audit standards. This framework may also be applied to other engagement conducted by the social auditor. Example, CSR impact assessment as required under the company's corporate social responsibility policy amendment rules 2021 or any other similar assignments. The social auditors and the reporting entity may agree to apply the principles of this framework to an engagement when there are no intended users other than the reporting entity. In such situations, the social auditor's report includes a statement restricting the use of the report to the reporting entity. This framework does not cover any element of financial audit or ये सब चीजें एक बार फिर रिपीट हो रही हैं, which may be covered by relevant financial auditing review standards. So financial audit के standards अलग हैं, social audit के standards अलग. Any other engagement conducted by the auditors of an organization, example statutory audit, internal audit, tax audit, will not be under the scope of this framework. तो ये सब इस framework में नहीं आते हैं. So what are these social audit engagements? There are 5 elements of social audit engagements which are 3-party relationship. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि 3 parties कौन कौन सी हैं? वो हैं social auditor, responsible party and intended users. नंबर 2 इसके अंदर इन्वॉल्व होता है social project, program, intervention scope. social project के बाद हमें मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क देखना होता है, इसको मॉनिटर कैसे करेंगे. उसके बाद ऑडिट एविडेंस की भी अपनी महत्ता है और उसके बाद सोशल ऑडिट रिपोर्ट या सोशल इम्पैक्ट रिपोर्ट, असेसमेंट रिपोर्ट, दीज एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो. तो इनके बारे में डिटेल में हम 5 के बारे में नीचे पढ़ेंगे. तो ये क्या क्या है. Number 1, 3-party relationship. Social audit engagement involves 3 separate parties. Number 1, social auditor, a responsible party, and the intended users. The responsible party, so these are 3.
The responsible party and the intended users may be from different entities or the same entity. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी और इंटेंडेड यूजर्स may be from different entities or the same entity. नंबर 2, social auditor. A social auditor means an individual registered with the self-regulatory organization under the Institute of Chartered Accountants of India or such other agency as may be specified the Security and Exchange Board of India, who has qualified a certification program conducted by the National Institute of Security NISM and hold a valid certificate. तो इसके पास 3 चीजें होनी जरूरी है. Responsible party. The responsible party is a person or person who is responsible for the subject matter. Generally, social enterprise is the responsible party. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि social enterprise is the responsible party. The responsible party may or may not be the party who engages the social. The engage means social उसको थर्ड पार्टी भी सोशल ऑडिटर को थर्ड पार्टी भी एंगेज कर सकते हैं. इंटेंडेड यूजर्स. The intended user are the person or persons or class of persons for whom the social auditor prepares the social audit. The responsible party can be one of the intended users but not the only one. तो इसमें भी कुछ अलग-अलग हो सकते हैं. सोशल प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड इंटरवेंशन स्कोप क्या होते हैं? सोशल ऑडिट एंगेजमेंट हेल्प्स डिफाइन द ऑडिट स्कोप ऑफ सोशल प्रोजेक्ट, program, intervention relating to the thematic areas of activities conducting by social project, program, and interventions. Social project monitoring framework. So, social project apply the methodology of theory of change when designing the social project. So, theory of change is very, very important. और इस लाइन का भी बहुत अच्छा मीनिंग है और इसको ध्यान रखने की जरूरत है. Theory of change methodology maps out how and why a desired change is expected to happen in a particular context. The social project monitoring framework based on theory of change model will detail out in the inputs, activities, outputs, outcome and impact. तो इसके अंदर ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं. थ्योरी ऑफ चेंज के लिए हमें उस टारगेट एरिया में इनपुट करना होता है, कुछ एक्टिविटीज करनी होती हैं, उनका क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटकम आएगा और क्या इम्पैक्ट आएगा, इसको असेस करना होता है. दिस कंट्रीब्यूट्स द सोशल ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स. Understanding the projects and nuisance, identify key evaluation parameters, thematic areas of intervention, and the management rendered to the company. The contribution to the social audit, understanding of the projects and nuisances, identify key evaluation parameters, thematic area of intervention, and the benefits rendered to the company. The following parameters are considered to assess the impact or change, whether it is positive or negative, occur due to the project. नंबर है इंक्लूसिवनेस. आपको सबको मिलकर के चलना है. एबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, particularly poorest and most marginalized, to access the benefit of activities, be part of institutions, whether healthcare, education committee, farmer groups, and have access to shared benefit through the intervention. Relevance. Relevance क्या होना चाहिए? Are these services, inputs, institutions facilitated in the project able to meet the community priorities? वो क्या उस कम्युनिटी की प्रायोरिटीज को मीट कर रही हैं वो सर्विसेज, इनपुट्स, वो इंस्टीट्यूशन, वो सोशल एडेड एंटरप्राइजेस
वो who has taken the project of theory of change, how was the planning done? उसको चेंज करने के लिए, कम्युनिटी की प्रायोरिटीज को चेंज करने के लिए क्या प्लानिंग की गई? Was the it participate? क्या इसमें समाज के लोग शामिल हैं? How were the success indicators developed? तो सक्सेस इंडिकेटर्स को कैसे डेवलप किया गया है, कैसे मापा जाएगा, हुआ या नहीं हुआ, तो कौन सा थ्योरी इसमें लगाई गई है? Was the community involved in development of project indicators? क्या कम्युनिटी इन्वॉल्व है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट? उसके बाद आ जाता है effectiveness and efficiency. Have the activities been able to effectively address community expectations? If the project is completed within the finalized time duration, how efficiently have the resources been deployed, monitored, and utilized? यदि हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, फाइनलाइज कर लिया, तो हम कितनी एफिशिएंटली उसमें रिसोर्स को डेवलप कर पा रहे हैं, उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं, और कम्युनिटी कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं. If there is a potential to replicate the solution in other states or districts, तो ये जो एक कम्युनिटी के ऊपर इसको अगर पायलट प्रोजेक्ट माना जाए, तो क्या दूसरी जगह भी इसको लागू किया जा सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स? उसके बाद कन्वर्जेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस विद गवर्नमेंट, अदर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक. तो गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है, पार्टनरशिप चलाती है, वर्ल्ड बैंक चलाता है, इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ इसका कितना कन्वर्जेंस है इन इनपुट्स का और इन चीजों का, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है. सस्टेनेबिलिटी. Do communities feel ownership over the assets created by the activities, and or will the project initiated community interventions sustain even after the exit of the funding agency? Are the institutions strengthened adequately to effectively manage and sustain the activity after the completion of the project? Has the exit strategy been drafted? Means आपने जब तक वो सोशल एंटरप्राइज में काम कर रहा था, तब तक ठीक था. उन्होंने जो फंड डिप्लॉय किए, रिसोर्सेज डिप्लॉय किए, उसके जाने के बाद कम्युनिटी ने उसको कितना अडॉप्ट किया, क्या उसको मेंटेन रखा, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी ड्राफ्ट की गई क्या, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच पाए. So this is for today. We shall discuss the audit evidence in the next. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.